Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today we are going to start with part 2 of SPCC, that is Secretarial Practice 12th Commerce. The first chapter in this is issue of shares. Before starting this chapter, we already knew about the shares and types of shares issued in the 11th of the in the 11th CCSP as well as OCM. So what we are going to learn in this chapter? We are going to learn about 11 major points of issuing a shares. First thing is procedure for share application, how share applications are being made. Next is procedure for share allotment, how the company allows its shares. The procedure of share application is itself divided into four parts: opening of bank account, then receiving applications, classifying applications in different bifurcations, then application and allotment. Allotment is divided into two parts: meaning and procedure. And pro rata allotment for less subscription, underwriters comes in the place and all. Next is legal restrictions, then irregular and illegal share allotment. What is irregular and what is illegal? Important part from the point of view of board examination. Renunciation, new word for us. We'll see what the renunciation means. Then statement of share allotment, share call. Share call means when the company call the remaining amount of money. Then share forfeiture means cancellation of share due to non-payment of any call or any other reasons. Surrender of share, share lien means right of share, and share dividend. So these are the 11 major points through which we will be learning in this chapter. Now talking about the importance of this chapter, how important this chapter is. In total, for the from the board examination perspective, this chapter consists of 11 marks. This chapter consists of 11 marks. And talking about the paper style of CCSP, the paper style of CCSP is bit different from OCM and a similar kind of to economics. In paper style of CCSP, we will be having MCQ, 1 mark MCQ, 1 mark question, 2 mark question, 3 mark question, 4 mark question as well as 5 mark question. Okay, so 1 mark MCQ, 1 mark very short answer type, 2 marks short answer type, 3 marks brief, 4 marks detail, 5 marks essay type. So we have 6 wide range of questions, 6 types of questions of wide range. So now talking about this chapter consists of 11 marks. This chapter consists of 11 marks, 1 MCQ, that is 1 mark, 1 question of 1 mark very short answer type, 1 question of short answer, that is 2 mark each, 1 question of in brief, that is 3 mark. So in total, and last one is 1 question of 4 mark, that is in detail, and the question which is asked for 4 marks will be in option, will be asked in option. So in total 4 plus 3 7 plus 2 9 plus 1 10 and 11, total 11 marks are questions are asked from this chapter. Only one question of essay type is not asked, remaining all questions are asked for 1 1 remaining all 1 1 questions are asked, and only in details type. That answer in detail means answer question for 4 mark have an internal option attached to it. Clear? So this is all about the preview of this chapter. We'll be basically learning what is share and how it is applied and how it is allotted and how it is issued, right shares and bonus shares. Okay, so let us start with share. What is share? We all know share is a part of a capital which is to be owned by public, and a company, especially a public limited company, has to issue share, then only they can get a certificate of commencement of business. Now talking about issuance of share should be done as per the three important provisions. It is necessary for a company to follow three steps. First one is provisions of security contract regulation act 1956. Second one is Companies Act 2013. Earlier it was Companies Act 1956, but now it is Companies Act 2013. And the third one is regulations of SEBI, that is Securities and Exchange Board of India Act 1992. And a company can issue share, a company can raises funds through share capital by issuing share into four types. It can issue shares through four ways, that is public issue, right issue, bonus issue, and private placement.
About public issue, right issue and bonus issue, we have already studied in 11th OCM and 11th CCSP in brief. And private placement we have studied in the OCM chapter number 6 about the from the private limited company. Okay, so let us see what else introduction is saying. A public company invites general public to subscribe its shares by invitation through prospectus. We already studied this. Company also issues security through private placement. In addition to this, shares are also issued by the company through right shares and bonus shares. It is necessary for a company to fulfill the provisions of Securities Contract Act 1956, the Companies Act 2013, and guidelines issued by Securities Exchange Board of India (SEBI) under Security and Exchange Board of India Act 1992 for public issue shares and other securities in India. Thus, a public company raises share capital through public issue, right issue, bonus issue, and private placement. Along with the initial public offer, existing shareholder can also part of their holdings to the general public through the prospectus by taking permission of BOD, that is Board of Directors. This is called offer for sale. The prospectus is this offer for sale is only possible when the equity shares are reissued or equity shares are offered second time, or it is not a fresh kind of issue. When if it is a fresh kind of issue, no one will be having that kind of share. So how offer for sale is possible? So offer for sale is always possible when it is not fresh issue. Now this is important. What is prospectus? Prospectus is any kind of notice, circular, advertisement, or any other document through which the company invites the public to subscribe to its securities. So any document through which public company invites or offer for its sale of its security, that is known as prospectus. This can be notice, advertisement, circular, or whatever it is. Okay. Now talking about introduction. So as discussed in earlier videos, we will be going through dual language of explanation. First I will try to explain in English, then I will try to explain in Hindi or Gujarati, either. ओके, तो शेयर, इश्यू ऑफ शेयर क्या है? जैसे कि 11 OCM और CCSP के हमने पढ़ा था, 7th चैप्टर ऑफ SP, राइट, टाइप्स ऑफ शेयर, एंड 6th चैप्टर ऑफ 6th and 7th chapter of 6th and 8th chapter of OCM, basically more over 6th chapter, forms of business organization part 2. ओके, तो शेयर क्या होता है? कोई भी कंपनी के कैपिटल का पार्ट जो है वो शेयर है. अब कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, उसको फंडिंग कहाँ से मिलेगी? शेयर इश्यू करने से मिलेगी. ओके, और 4 जो बेसिक वे है जहां से शेयर इश्यू करके पैसा फंड रेज किया जा सकता है, वो है पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू, बोनस इश्यू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट. चारों के बारे में एक छोटा सा इंसाइट हमें 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी मिल चुका है. ब्रीफ में क्या होता है हम इस चैप्टर में देखेंगे. नाउ टॉकिंग अबाउट व्हेनेवर, जब भी किसी कंपनी को, स्पेशली पब्लिक लिमिटेड कंपनी को फंड रेज करने हो थ्रू शेयर्स, तो उसको 3 रेगुलेशंस, 3 रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, 3 एक्ट के रूल फॉलो करने पड़ते हैं. फर्स्ट है प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956, रेगुलेशन एक्ट है 1956 में इशू हुआ था. कंपनीज एक्ट सेकंड है कंपनीज एक्ट 2013. 2013 से पहले कंपनीज एक्ट 1956 इंप्लीमेंट होता था, लेकिन 2013 में जो अमेंडमेंट्स हुए उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 यूज होता है. एंड लास्ट वन इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, जो कि सेबी का रेगुलेशंस है. ये 3 रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ये 4 टाइप्स में से कोई भी टाइप का शेयर इश्योरेंस का प्रोसेस यूज किया जा सकता है, और उसी से हम फिर आगे फंड रेज करते हैं. और एक इसमें नई चीज हमें जानने को मिली, ऑफर फॉर सेल. ऑफर फॉर सेल क्या होता है? ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि कोई भी ऐसे शेयर्स जो ऑलरेडी किसी टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स के पास प्रीवियसली है, मतलब कोई भी ऐसे शेयर्स जो दोबारा कंपनी इश्यू कर रही है, और वो शेयर्स अगर सपोज मेरे पास ऑलरेडी है, तो कंपनी के साथ साथ मैं भी उस शेयर्स को सेलिंग के लिए ऑफर करना चाहता हूँ, सेलिंग के लिए मतलब मैं उस शेयर को बेचना चाहता हूँ, तो मैं जो कंपनीज है उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, उनकी परमिशन लेके उसी प्रोस्पेक्टस के थ्रू जनरल पब्लिक को मेरे शेयर्स भी बेचने के लिए इन्वाइट करूंगा.
तो इसी को हम कहते हैं ऑफर फॉर सेल ना। जब ऑफर ऑफ सेल में यह कंडीशन होती है, प्री कंडीशन, कि ये ऑलरेडी होने चाहिए। तो अगर कोई भी शेयर मेरे पास ऑलरेडी है तो इसका मतलब यह है कि ये फ्रेश इशू नहीं होगा शेयर का। तो यही कहता है कि ऑफर फॉर सेल हमेशा फिर फ्रेश इशू के लिए नहीं होता। कोई भी शेयर जो फर्स्ट टाइम इशू हो रहे हैं उसमें ऑफर फॉर सेल नहीं होगा। लेकिन कोई दूसरे काइंड ऑफ शेयर्स जो कंपनी दोबारा इशू कर रही है उसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो ऑफर ऑफ सेल के थ्रू अपने शेयर्स सेल कर सकते हैं। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन फॉर the company takes help of various intermediaries like lead manager, registrar, transfer agent, bankers to the issue, underwriters, depository, credit rating agencies, stock exchange, and so on. So these kind of agencies, these kind of mediators are needed for issuing of shares. To complete the entire process of public issue, the company secretary invites the process of issuing securities with the help of these intermediaries by fulfilling provisions of prevailing laws. After obtaining sanction of prospectus from SEBI, the procedure for public issue can be divided into two parts: procedure for share application and allotment of shares. Okay, so without taking help from these mediators like depositories, transfer agent, banker to the issue, and so on, no issue of share can be done, or no process of issue of share can be initiated. So after taking the help of these intermediaries or mediators, and after fulfilling all the provisions of law, the sanction of prospectus is obtained from SEBI, and after the prospectus is sanctioned by SEBI, the process of issuing of share is divided into two parts: share application and allotment of shares. Okay, so क्या कहते हैं कि कोई भी शेयर इश्यू करने के लिए कंपनी को अलग अलग मीडिएटर्स, अलग अलग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि लीड मैनेजर हो गया जो शेयर को लीड करेगा, रजिस्ट्रार हो गया, ट्रांसफर एजेंट्स हो गए, बैंकर्स हो गए, अलग अलग बैंक्स हो गए, अंडरराइटर्स हो गए जिसके बारे में हमने 11 में अच्छे से पढ़ा हुआ है, डिपॉजिटरीज हो गए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो गए, स्टॉक एक्सचेंज हो गया। इन सब मीडिएटर्स की हेल्प लेने के बाद सारे फुलफिल जो प्रोविजंस है लॉ के, लीगल प्रोविजंस है, उनको फुलफिल करने के बाद सेबी से प्रोस्पेक्टस सैंक्शन कराना होता है। और जैसे ही सेबी जो अपना प्रोस्पेक्टस है वो सैंक्शन करता है, परमिशन देता है शेयर इशू के लिए, तो जो भी पब्लिक इशू ऑफ शेयर है उसको टू पार्ट में हम आगे डिवाइड करके प्रोसेस को चालू करते हैं। जो टू पार्ट्स हैं वो है, एक तो प्रोसेस ऑफ शेयर एप्लीकेशन मीन शेयर जनरल पब्लिक से शेयर एप्लीकेशन इन्वाइट करना, उनसे एप्लीकेशंस लेना, और दूसरा है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर में जिन जिन से एप्लीकेशन हमें मिली है शेयर परचेज करने के लिए या सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए, उनको शेयर्स अलॉट करना। क्लियर? सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद प्रोसीजर फॉर शेयर एप्लीकेशन। Okay, so procedure for share application. The process of procedure for share application is divided into four steps. First step is opening of bank account. Second step is receiving of share application. Third step is classification of share application, and fourth step is statement of share application and share allotment. Okay, so first thing, student, this is an important question from point of view of 3 and 4 marks question. So we'll go slow, but we'll try to understand it from a fully point of view. Now talking about opening of bank account. Bankers to the issue are appointed by a company to make all transactions related to issue of shares. Company can open a current account in any scheduled bank for making transactions regarding to issue of shares. For the purpose of public issue, the company opens a special bank account with the bankers to the issue, which is known as escrow bank account. Okay. Now what do you think? Company can open a current account, in any scheduled bank for transaction regarding issue of share, but for the purpose of public issue we need a special bank account known as escrow bank account. Now what is special in escrow bank account? Let us see. This account is opened by presenting a copy of resolution passed in the meeting of board of directors regarding opening of the account along with other documents. So for opening an escrow account, a resolution is needed that is passed in meeting of board of directors for public issue and for opening of escrow bank account. Now what are the advantages or what are the specialty of this bank account? See, while opening this account, company assure that the share application money will be deposited in this account, and the total amount including share capital and premium, if shares are issued at premium, will be transferred to company's
account are only after the completion of process of share allotment. Now what is this? Understand, company will receive applications. Even company don't know how much applications they will be receiving. If a company is issuing 10,000 shares, the company is not sure that they will be receiving applications for 5,000, 7,000, 9,000, 10,000, 12,000, 10,500, 15,000. No guarantee. Okay, so what do they will open a escrow bank account. All the initial deposits will be done in the escrow bank account. Capital, that is share application money, as well as premium if any. Okay, and the whole of amount will be in the escrow bank account till share allotment is done. Till share allotment is done. As soon as the shares are allotted, the amount in the escrow bank account will be transferred to the company's current account. Company's current account. Okay, now why this is done, let us see. This account is closed after the completion of the process of share allotment. As per the latest guidelines of SEBI, that is on 1st January 2016, share application can be made only through ASBA. ASBA means application supported by blocked amount. According to ASBA, the share application money is blocked by the bank where the applicants hold his account. The money remains blocked till the share allotment is done and the application money is transferred to the company's account. As soon as the allotment of share is done, the amount of share already transferred from the bank account to the applicant of bank account of the company. Thus, the question of refunding the application money or share not allotted does not arise. Now, see, now you may understand why escrow account is open. So till the allotment of share money is kept in the escrow account. As soon as the allotment is done, for the number of share allotted, the money or the money related to the shares allotted will be transferred to company's bank account, and the money for which shares are not allotted, as it is blocked by the bank under ASB, application supported by blocked amount, the money for which share is not allotted will be automatically refunded to the individual's bank account. Okay, so this is why an escrow account is added, an escrow account is opened. In escrow account, all the amount that is deposited is blocked. No company can use that amount. Clear? Okay, so अब इसको हिंदी में समझते हैं कि बैंक अकाउंट ओपनिंग में क्या करना पड़ता है. कंपनी जो है, कोई भी पब्लिक कंपनी जो पब्लिक इशू कर रही है, वो उसका करंट अकाउंट सेपरेटली ओपन कर सकती है, लेकिन उसको एक स्पेशल अकाउंट जिसको हम एस्क्रो बैंक अकाउंट कहते हैं वो ओपन करना पड़ता है. और एस्क्रो बैंक अकाउंट का रूल ये कहता है कि जब तक शेयर अलॉट नहीं किए जाते कंपनी की तरफ से, एस्क्रो बैंक अकाउंट के अंदर जितना भी अमाउंट है वो ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट के तहत ब्लॉक रहेगा. कोई भी कंपनी उसे यूज नहीं कर सकती. हालांकि पैसा बैंक के पास आ चुका होता है, पैसा बैंक में डिपॉजिट हो चुका होता है, लेकिन कोई भी कंपनी इसको यूज नहीं कर सकती. और ये जो ASBA का प्रोविजन आया है वो 1 जनवरी 2016 से आया है. ये प्रोविजन लाने का पीछे का रूल ये था, पहले प्रोविजन समझ लेते हैं कि प्रोविजन क्यों लाया गया. प्रोविजन का रूल ये कहता है कि जब तक एप्लीकेशन के पैसा है, जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाता तब तक पैसा ASB जो कि एस्क्रो अकाउंट है उसके अंदर ASB के थ्रू रहेगा. और इसका रीजन ये है कि जितने का अमाउंट के लिए शेयर्स अलॉट किए हैं उतना पैसा कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और जिस अमाउंट के लिए शेयर अलॉट नहीं की है वो पैसा ऑटोमेटिकली जिस इंडिविजुअल ने डिपॉजिट किया था उसके बैंक अकाउंट में वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा. सो ये एक एस्क्रो अकाउंट का वर्क है ना. अब क्वेश्चन ये आता है कि जो स्पेशल अमेंडमेंट आया, स्पेशल प्रोविजन आया, ये एस्क्रो अमाउंट लाने की बात थी, ये रीजन क्या था. तो रीजन इसके पीछे क्या था कि 2016 से पहले होता ये था कि कोई भी जो फेमस कंपनीज थी, जो कंपनीज की गुडविल या नेटवर्थ अच्छी होती थी, वो 10,000 शेयर इशू करने के पीछे 15,000 20,000 एप्लीकेशंस या ज़्यादा एप्लीकेशंस रिसीव करती थी. और होता ये था कि वो एप्लीकेशन के साथ एक मनी अमाउंट अटैच होता है, सपोज 5 रुपीज़. तो कोई कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करने, तो इसकी जगह उसको एप्लीकेशन जाके 2 लाख रुपीज, 2 लाख शेयर्स की, और एप्लीकेशन मनी था 5 रुपीज. तो 5 लाख रुपीज जहाँ आने थे उसकी जगह उसके पास 10 लाख रुपीज रिसीव्ड हो गए. अब शेयर तो कंपनी 1 लाख ही इशू करने वाली है. तो होता ही था कि जो 2 लाख में से 1 लाख शेयर अलॉट होते थे और बाकी के 1 लाख शेयर्स के पैसे जो रिफंड करने थे, वो रिफंड करने के प्रोसेस में 30 to 60 डेज लग जाते थे.
तो कंपनी को बिना इंटरेस्ट पे कोई बड़ा और ह्यूज अमाउंट 14 डेज पहले डिपोजिशन का और बाद में 30 to 60 डेज या उससे ज़्यादा भी टाइम लगता था, तो 2.5 मंथ के लिए बिना इंटरेस्ट के पैसा यूज करने को मिल जाता था। और यही रीज़न था कि कोई कंपनी जानबूझकर भी रिफंड करने में डिले करती थी। तो उस वो ये प्रॉब्लम ना हो, ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको शेयर अलॉट नहीं हुए उनको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, उसके लिए 2016 में ASBA लॉन्च किया गया और एक एस्क्रो अकाउंट स्पेशल सी खोला जाएगा। उसमें आपको शेयर्स अलॉट हुए तो आपका अकाउंट मनी ब्लॉक रहेगा, अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो इमीडिएटली आपके अकाउंट बैंक अकाउंट में जो अमाउंट है मनी है वो वापस री क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? So this was the process of first step of process of share application, opening of bank account. The working of the share application process is done through current account, but the starting initial stage is done by a special bank account known as escrow bank account. The remaining three steps will be covering in the next part of chapter. Till then, stay home, stay safe, happy learning.